Myself Dr. Meghali, and I'll be talking about digestive system, which is a chapter in human physiology. In this chapter, we will study about digestive tract, the whole process of digestion, and mechanism of absorption as well as assimilation. Whatever food we intake, it comprises of complex carbohydrates, fats, vitamins, minerals, and proteins. So they need to be converted into simpler forms which can be absorbed by the body. So in first process, what is happening is digestion, कि हम complex forms को convert कर रहे हैं into the simpler forms. That is digestion, followed by the absorptions of the nutrients. Right, whatever has been converted into simpler forms, it has to be absorbed by the body. That is absorption, and utilization of that food for energy is called as assimilation. So we'll be discussing these topics one by one. ये पूरा प्रोसेस डाइजेशन का जहाँ होता है, that is called as digestive tract. As the name suggests, tract क्या होने वाला है? एक ट्यूब which has two ends. The first end is the mouth or the interior opening from where the ingestion or the intake of food will happen, and the terminatory or the other end of the tract is anus, from where the excretion or egestion, that is the excretion of the waste materials, will occur. So firstly we will understand the histology of this digestive tract. This digestive tract is made up of 4 layers. We'll discuss from the innermost to the outermost. So the innermost layer is mucosa, followed by submucosa, then the third layer is muscularis propria, and the outermost is serosa. In the mucosa, as the name suggests, it would produce mucus for lubrication. So it is secretory and absorptive in function. Secretion किस चीज़ का हो रहा है? Mucus का. और absorption क्या होगा? जब nutrients that are digested by different enzymes, they are absorbed through this layer only. So it is secretory and absorptive in function. Next we have submucosa. जो भी nutrients absorbed होते हैं through mucosa, they have to go to the different target cells. And how would they go? Through the blood circulation. So this submucosa, it has blood vessels and lymphatic vessels that would provide a vascular supply for nutrients so that they can reach to different target body cells. Now the third layer is muscularis propria. You can relate with M, that its function is movement, mechanical movement of food. Throughout the whole digestive tract. Propulsions होंगी इस मसल के अंदर, जिसकी वजह से the food would move from the one organ to the another. Then the outermost serosa has lubricating function, as well as it reduces the friction between the organs. I'll quickly make a diagram for your understanding.
So this is the diagram which represents the histology of the digestive tract. As you can see, the innermost layer is mucosa, which has been divided into two parts. This layer, the innermost one, is lamina propria, which is made up of connective tissue, and underlying this lamina propria is a thin layer of smooth muscles, which is called as muscularis mucosa. So lamina propria and muscularis mucosa together, they make up the mucosal layer. Also followed by the mucosa, you have submucosa. Submucosa, as I've already told you, has vascular supply of blood vessels as well as lactic vessels. Also it has a nerve network. तो ब्लड वेसल्स भी हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी हैं और नर्व नेटवर्क भी है जो नर्व इम्पल्सेस इस तक लेकर आएगा. So this nerve network which is present in submucosa is called as Meissner plexus. This is important. Then you have another layer is muscularis propria, which has been further divided into two, inner circular layer and outer longitudinal layer. जिस डायरेक्शन में ये जिस हिस्टोलॉजी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मसल फाइबर्स, उसके बेसिस पर वी हैव named them as inner circular. The inner one is circular and the outer one is longitudinal. And the last layer that we have to study is serosa, which is again made up of connective tissue and is lubricating in function. Also another network that is present in at the junction of inner circular and outer longitudinal is Auerbach's plexus. So you have two nerve network. The first one is present in submucosa named as Meissner plexus, and the another one is present at the junction of inner circular and outer longitudinal muscles of muscularis propria, and that is named as Auerbach's plexus, as you can see here. Now we'll move forward. जब भी आप खाना खाएंगे, whenever you are ingesting food, what is the first thing that happens? पहली चीज क्या होगी? That you chew the food, है ना? Chewing क्या है? It is the physical breakdown of the food into smaller pieces. That is the conversion of these bigger pieces into smaller forms, into the bolus that can be easily passed down from the esophagus to the stomach. So digestive tract में जो starting हो रही है, that is from the mouth. These are nostrils, and जो यहाँ से opening जाती है अंदर की तरफ, this is nasal chamber. इसको हम discuss digestion में नहीं करेंगे. What we need to discuss is this opening जहाँ से food अंदर जाएगा, and this is mouth. ठीक है? It is bounded by lips. और लिप्स के अंदर क्या होगा? टीथ. ये टीथ प्रेजेंट है यहाँ पर. एंड दिस होल कैविटी इज कॉल्ड एज बक्कल कैविटी. अगर आप टंग रोल करके देखें, द बिटवीन द लिप्स एंड द टीथ, व्हेन यू कैन वेयर द स्पेस वेयर यू कैन रोल योर टंग इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल. यानी कि ये पोर्शन टीथ और लिप्स के बीच में जो है, दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल. इससे अंदर की जो कैविटी है, दैट इज बकल कैविटी. तो आप टंग की मूवमेंट से फील कर सकते हैं द रूफ ऑफ बकल कैविटी. सो जो इनिशियल पोर्शन है, इट इज हार्ड. यानी कि जो ये वाला पोर्शन होता है, ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैक्सिलरी बोन्स एंड पैलेंटाइन टिश्यूज. लेकिन जो इसका इंटरनल पार्ट है, इट इज सॉफ्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज. फाइन. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट माउथ. माउथ में हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जैसे ही आपने खाना च्यू करना शुरू करा, तो आप कैसे क्या यूज कर रहे हो उसके लिए? टीथ यूज कर रहे हैं. तो हम सबसे पहले टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे. So teeth are there for physical breakdown of food. केमिकल तो स्टमक में जाकर होगा,
पर फिजिकल ब्रेकडाउन जो है इट विल स्टार्ट इन दी माउथ इटसेल्फ. You can classify teeth on the basis of different like for example you can differentiate them on the basis of sets. The first basis for classification of teeth is sets. Sets के हिसाब से कैसे कि अगर एक ही set of teeth रहने वाला है for the entire life, then it is called as monophyodont. एक ही सेट रहेगा, उसमें कोई वियर एंड टियर लॉस ऑफ टीथ होता है, देन इट विल परसिस्ट. नया कोई भी सेट नहीं आएगा. ठीक है, उसका एग्जाम्पल है वेल. नेक्स्ट कैटेगरी इज डाइफायोडोंट. डाई का मतलब होता है दो. इसका मतलब लाइफ टाइम में दो सेट्स ऑफ टीथ रहने वाले हैं, जैसे कि हमारे अंदर होता है. 6 to 12 years of age के अंदर जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है इट इज़ टेम्पररी एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट सेट ऑफ टीथ जो कि फिर पूरी लाइफ रहेगा. तो जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है दैट इज टेम्पररी और वी कैन कॉल इट एज डेसिडुअस, जो इवेंचुअली ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट सेट ऑफ टीथ्स. Permanent teeth. Example is, as you know, man. Fine. The third category is poly. Poly means many. यानी कि बहुत सारे सेट्स जो हैं वो लाइफ में आने वाले हैं. एग्जाम्पल है शार्क. फाइन. सो क्या होगा कि विद टाइम एक बार लॉस जो हुआ है सेट्स का, उसके बाद नए टीथ आ जाएंगे, वो भी लूज हो जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे, वो भी लूज हो जाएगा, फिर दोबारा नए आ जाएंगे. सो दिस हैपेंस इन द केस ऑफ पॉलीफायोडोंट्स. थैंक यू.